Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue solving exercise 21 from chapter Solids. So starting with question number 2. The length, breadth and height of a rectangular solid are in the ratio 5:4:2. If the total surface area is 1216 square centimeter, find the length, the breadth and the height of the solid. It's extremely easy, students. There is a rectangular solid, that is there is a cuboid. एंड क्यूबॉइड का डायमेंशंस का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज द रेशियो ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन टू अस. We need to find out the actual values of length, breadth and height. Okay, we need to find out the actual values of length, breadth and height. We are also given the total surface area of the cuboid. So first we'll write down the given information. So for the cuboid, we are given the ratio of length, breadth and height. Length, breadth, height ये order में है. So L is to B is to H. It is 5:4:2. We are also given the total surface area of the cuboid. Okay, but before that, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का रेशियो दिया है. सो देर इज सम कॉमन फैक्टर विच इज कैंसल्ड आउट. लेट्स से दैट द कॉमन फैक्टर इज x. ओके, सो कॉमन फैक्टर x है. देन l का वैल्यू हो जाएगा 5x, b का 4x एंड h का 2x. करेक्ट. सो लेट द कॉमन फैक्टर be x. So therefore I can say L is 5x, B is 4x and H is 2x, right? L corresponds to 5, B corresponds to 4 and H corresponds to 2. Okay, order में जाना है. First corresponds to the first, second to the second and third to the third. Okay. Now centimeter, meter. यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है. सो ये सेंटीमीटर में होगा. ओके, सो दिस विल बी इन सेंटीमीटर, राइट. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एल, बी एंड एच. दैट इज एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. फॉर दैट वी आर गिवन द टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया of cuboid is 1216 square centimeter. What is the formula for total surface area? It is twice LB plus BH plus LH, right? So formulae thorough होना चाहिए students. Okay, then only you will be able to solve. So total surface area of cuboid is twice LB plus BH plus LH. Total surface area का value is 1216. So 1216 is equal to twice L is 5x, B is 4x, again B 4x, H is 2x, L 5x and H 2x. So solving this, we will get the value of x. एक बार x का वैल्यू मिल गया, then we will get the value of length, breadth and height. Okay. So 5 4s are 20, x into x, x square. 4 2s are 8, x into x, x square. यहाँ पे 10 x square. 2 को शिफ्ट करते हैं. So 1216 divided by 2 is equal to 20 plus 8 plus 10, 38 हो जाएगा. 38 x square, right? 2 6 0 8, right? So 608 is equal to 38 x square. 38 को भी शिफ्ट करते हैं. So 608 by 38 is equal to x square. This is what we got, right? 2
19 जा 2, 30 जा 4 जा 304 डिवाइडेड बाई 19. यहाँ पे लास्ट में डिजिट क्या है? 9 है, यहाँ पे 4 है. 9 into what will give me 4 at the end? I need 4 at the end. 9 6 जा 54 होता है, राइट? सो 19 6 जा is 114. सो 304 तो नहीं मिल रहा है. 19 6 जा नहीं मिल रहा है, 19 16 जा. ओके, सो लेट्स ट्राई 19 16 जा. Right, 114 and 19. So yes, we are getting 304. So 19 16 जा. ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. सिंपल, सबसे इजी. 304 को फैक्टराइज करो. स्टार्ट फैक्टराइजिंग 304. सो व्हेन यू विल फैक्टराइज 2 15 जा 2 जा 2 7 जा 6 जा 2 38 जा 2 19 जा and 19 1 जा. So numerator में you are getting 2 into 2 into 2 into 2 into 19 upon 19. 19 cancel हो गया. This is 16, right? So 16 is equal to x square. Taking square root on both the sides. Four is equal to x, right? 16 का square root 4, x square will be x. So x is equal to 4. Just switch the sides. x का वैल्यू मिल गया. अब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट फाइंड आउट करते हैं. L is 5 times x, right? It is 5x, that is 5 times 4, that is 20 centimeter. Breadth is 4 times x, that is 4 times 4, which is 16 centimeter. Height is 2 times x, that is 2 into 4, that is 8 centimeter. So we found the values of length, breadth and height. After this, write down the final statement. The length, breadth and height of the rectangular solid are 20 centimeter, 16 centimeter and 8 centimeter respectively. Alright, so please add a statement. Next question, question number 3. The volume of a cube is 729 cubic centimeter. Find its total surface area. For a cube, we are given the volume. So write down the given. For a cube, volume is given. It is 729 cubic centimeter. What is the formula for volume of a cube? It is side cube. That is, side is denoted by A, so volume is A cube. So write down the formula. Volume of the cube is A cube. Volume पता है, it is 729, so 729 is equal to A cube. This is a perfect cube. 729 is cube of 9, right? So taking cube root on both the sides, यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे a मिलेगा. यहाँ पे रीजन दो, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स. ओके, whenever you are taking cube or taking cube root or square and square root, you always write down the reason. ठीक है. Switch the sides. Therefore a is equal to 9 centimeter. सेंटीमीटर में मिलेगा because volume is in cubic centimeter. Okay, so we got the value of the side of a cube. We need to find out the total surface area. Total surface area of cube. It is 6a square. 6 sides are there in a cube, right? 6 faces है. Sorry, not sides, 6 faces है. So 6 faces का area का sum, that is 6a square. So it is 6 into 9 square, correct? That is 6 into 81. 6 ones are 6, 6 eights are 48. So 486 square centimeter. Area है तो square centimeter. Okay, so don't forget the units.
बॉक्स कर दो आंसर को. Alright, so total surface area of cube is 486 square centimeter. Now students, if you are not clear with cubes and cube roots, squares and square roots, इसको फैक्टराइज करो. ठीक है, फैक्टराइज करके भी आंसर मिल जाएगा. 729 को फैक्टराइज करो. दिस इज डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ द डिजिट्स देखो, इट इज 18, राइट. मैं सारे डिजिट्स को ऐड करूँ तो 18 मिल रहा है. दैट इज अगेन 1 + 8 9, so divisible by 3. So 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3 27s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are. क्यूब रूट लेना है तो 3 3 का ग्रुप बनाओ. ओके, ग्रुप ऑफ 3 of same digits, that is same numbers, sorry not same digits, same numbers. Okay, so 3 3 का ग्रुप बनाओ. नाउ यहाँ से एक 3 बाहर आएगा, यहाँ से एक 3 when you take cube root. So 3 into 3 9, so 9 is the answer. All right, and then find out the total surface area. Be